हेलो समस्त को सुस्वागतम। आज हम बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर टे पढ़मा दैट इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट। इनफैक्ट रिसेंट जेन एग्जाम अच्छे पीओ एग्जाम से पीओ रे गोटे टॉपिक रे से रहते इंस्टीट्यूशंस आ इंस्टीट्यूशंस हमें इनफैक्ट लास्ट गोटे वीडियो रे हमें इंस्टीट्यूशंस that international level हमें पढ़ी सारी चान that is United Nations आउ आज हमें पढ़मा द पार्लियामेंट बा संसद आउ पार्लियामेंट गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। ई चैप्टर रु सबु एग्जाम सेरा ओडिशा सीजीएल कह एसएससी कह एंता किछि एग्जाम नाही न जेंथरु इथरु क्वेश्चंस नाही आसे तो इटा के बहुत भल से बुझवा। इट इज वेरी सिंपल गाइस। टिके टिके धोखा खाई ऐसा से जाके हमें फोकस करवा। ओके सो लेट्स स्टार्ट गाइस। लेट्स वंस अगेन वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके वैसे नहीं हाफ एन आवर पूरा फुल एनर्जी का फुल दमरा वी विल गोइंग टू लर्न। ओके गाइस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज द पार्लियामेंट। और ई चैप्टर रे हमें कान गाना सिखमा। इनफैक्ट Parliament in detail. I will try to make it two videos. A first video with a part of second video रे हमें किसी committee बाबत discuss करना. Fine. So Parliament बा like our country it is governed by constitutions. आमर देश टा केंद्र govern होचे constitutions रे. It means the prime minister, president, parliaments, judges, everybody are governed by the constitutions. Nobody is above the constitutions. The supreme thing is the constitutions. In fact, parliament is also not the supreme one. Okay, it is not a sovereign body. It is governed by the what? Constitutions. तो जहाँ भी किसी power अच्छे फंक्शंस अच्छे वे अच्छे से सबु कॉन्स्टिट्यूशंस रे लिखा है छी। अब हमें जानी था बहुत भल से कि आवर कॉन्स्टिट्यूशंस इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द एंटायर वर्ल्ड एंड वी नो दैट कि लॉन्गेस्ट तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर 25 पार्ट्स आर देयर। आउ पार्लियामेंट बाबत रे पार्ट 5 रे लिखा है छी। क्लियर। सो पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी. It is governed by the constitutions, and about the parliament in our constitutions in part 5 it is written about the parliament. Clear. तो part 5 रे पर बहुत सारा चैप्टर अच्छे। part 5 रो chapter 2 रे about the parliament बाबत रे मेंशन हेई छे and which are enshrined in the constitutions under article 79 to 122. so far हमें बुझला पार्लियामेंट जेंटा की पार्ट 5 रे चैप्टर 2 रे आर्टिकल 79 रो 122 आर्टिकल्स रे अबाउट पार्लियामेंट बाबत रे लिखाई छ। गॉट इट। एक्चुअली पार्लियामेंट कहले कहा के बुझू छ हमें। कीप इट इन माइंड कि पार्लियामेंट इज नेवर ए सोवरेन बॉडी. इट मींस दैट व्हाटएवर इट वांट्स इट कैन नॉट डू. Whatever the powers it has, it only got the power from the constitutions itself only. Clear. And we will read one by one. And the parliament, actually parliament कहले कहा के बुझाई ऐसी लोकसभा राज्यसभा no है. Parliament comprises the president and the two houses that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Clear. So parliament comprises president and Lok Sabha and Rajya Sabha. Clear. In fact, is the president a member of parliament? No, president is not a member of parliament. President is not a member of parliament. But yes, president is an integral part of parliament. President is an integral part of parliament. Clear. बुझी गले हमें। तो पार्लियामेंट कहा के नहीं गठी
पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और दुईटा हाउस लोकसभा और राज्यसभा क्लियर इनफैक्ट क्वेश्चन में arises is the president a member of parliament no president is not a member of parliament but president is a part of parliament integral part of parliament clear बुझी गले लिखि नेलो next further parliament is the supreme legislative body in our country आम जानी छे कि legislature executive judiciary and the other institutions are the four major institutions in our country our legislative at the union level that is called as parliament the legislature at the union level are called as parliament the legislature at union or central level are called as parliament in fact the parliament is the supreme legislative body in our country what is that supreme legislative body in our country or highest legislative body in our country we know very well that India it is a parliamentary form of government or federal in nature that is central level state level local level and in the central level Lok Sabha Rajya Sabha president house clear at the state level it is the governor and the what is legislative assembly and legislative council खाली छोटा एक स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला आमे बहुत भल से जानि सारी छे and the local level we will discuss one by one but today we will mainly discuss about the parliament and parliament it is the supreme legislative body in our country clear बुझी गले and parliament further let Lok Sabha and Rajya Sabha and the president house today mainly we will discuss about the Lok Sabha and the Rajya Sabha in detail in fact Lok Sabha is also called as house of people it is also called as house of people it is also called as lower house it is also called as first chamber it is also known as popular chamber clear बुझलो समझते आम लोक सभा is known in various name in our country it is known as house of people it is known as lower house it is known as first chamber it is known as popular chamber and many more in fact Lok Sabha represents the entire country okay fine आमे गुटे गुटे डिस्कस करवा आफ्टर लोक सभा तापर राज्य सभा देन प्रेसिडेंट हाउस देन वी विल डिस्कस अदर्स ओके तो पार्लियामेंट और लोक सभा के आगो आमे देखमा सो लोक सभा फर्स्ट what it is called as the house of people lower house first chamber and popular chamber okay fine in fact the member what is the strength of Lok Sabha the strength of Lok Sabha the maximum strength of Lok Sabha can be 550 plus to 552 how much 550 plus 2 that is 552 ताबना हमर एंटायर कंट्री के हमें 550 टा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे क्लासिफाई करा ही पारवा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस बट एबे केते अछि एट द प्रेजेंट सिनेरियो it is 543 plus 2 however this is the thing ijan duita na they are the 543 they are directly elected by the people through the general elections and through the universal adult suffrage clear but these are the two members which are the Anglo-Indian fine however this Anglo-Indian they are elected they are not elected they are nominated but recently in the year 2019 only 104th amendment took place kete 104 out 104th amendment re Anglo-Indian ta hate gaya wala so at present the strength of Lok Sabha is 543 clear
and these 543 are elected by the people through the general elections. Clear? And so far, how many general elections have been take place? 17th. The last general election, that was 17th general elections. Maximum strength can be 552. Recently, these are Anglo-Indians. At present, 543 are there. Clear? I think everyone have understood both also bujhlo hona nahi. Further, out of 543, 84 seats are reserved for SC and 47 seats are reserved for ST, and the remaining are general. Clear? Remaining are general. Questions asi pare. So far ame kana padla. Parliament is the supreme legislative body. Clear? बुझी गले. Parliament पर तीनटा जिनिस गोटे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. आमे लोकसभा के डिटेल पढुचा. लोकसभा के काना कहा होचे पॉपुलर चेंबर, लोअर हाउस, and it is also called as House of Peoples. लोकसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते ही परबा 552. 550 plus 2. 550 can be elected, and the two are Anglo-Indian nominated by President of India. But recently Anglo-Indian जेंटा नॉमिनेट प्रेसिडेंट करि पड़थले सेटा के हटे दिया गला through the amendment 104 in the year 2019. Clear? So remaining एबे केते 543. So if the questions will come, how many Lok Sabha constituencies are there in our country, then the answer will be how much? 543. केते 543, and out of them scheduled caste represent 84, scheduled type represents 47, and total is 543. Clear? हाँ ना नहीं? I think everybody have बुझलो ना नहीं? Okay, लिखी नमो. Next, जदि लिखी नहीं थी वो ये पॉज करके लिखी पका. Okay, fine. Next, लोकसभा आमे जो कहला 543, how they are elected? What are their minimum qualifications? Well, तांकर minimum age for 25 years हवार कथा to be a member of Lok Sabha. They must not hold any office of profit. Further, they must be a citizen of India. What is that? They must be a citizen of India. Got it? Clear? The maximum okay. And the general elections. Ketera general elections so far hela no? 17th. Fine. So far hame bujhi gala. Okay. What is the term? Kete dinon lagi? Lok Sabha, it is not a permanent house. इतला में लोक सभा राज्य सभा के कंपेयर करमा, लोक सभा is not a permanent house, but राज्य सभा is a permanent house. And when I say permanent, Lok Sabha normally that tenure is 5 years. Normally is 5 years. However, but in the case of emergency, यदि emergency proclaim करावाला, like financial emergency or any emergency, right? In that case, mainly the national emergency under Articles 328, if the national emergency is proclaimed, then the tenure can be extended for a period of 1 year. Further, आउ यदि national emergency फिर continue चलला, फिर 1 year फिर proclaim करिकरी, फिर लोकसभा रे पारित करिकरी आउ वर्षे बढ़ाई पारबा. It can be continue like that. But यदि national emergency cease करि निया गला, बंद कर दिया गला, ताहले the tenure cannot be extended more than 6 months. This is very, very important. Normally for a period of 5 years, it can be extended for another 1 year after proclamations of emergency. But if the national emergency ceased, then it cannot be exceeded for a month of 6 months. Clear? For a period of 6 months. It can also reduced if no political party got the majority, or if the coalitions cannot be formed. In that case, clear? Next,
because we know that in order to form the government, minimum half, more than half seat is required. Fine. The member बुझला हमें, टॉर्क बुझला. Okay. लोक सभा who presides it? प्रश्न आसवा. Actually, who is the presiding officers of लोक सभा? बहुत important question actually. लोक सभा के चौलासी किए. The Lok Sabha is presided by Speaker. Who? Speaker of Lok Sabha. Speaker. Who? Speaker of Lok Sabha. In the absence of Speaker, then Deputy Speaker. Okay, fine. And if the Deputy Speaker is not there, then so-called as 10 members are elected by President, Speaker, or pro tem they are called. बुझिएगा हमें? हाँ ना नहीं कि who is the presiding officers of Lok Sabha? That is Speaker or Deputy Speaker. Clear? सदावला revise करते हो बुझू तो जिनिस टाके. Okay, the Speaker and Deputy Speaker. In fact, Speaker of the House they enjoy a very important positions. He is the dynamic one over there because he is also called as the spokespersons of the house, and he ensures the rights of all the members of Lok Sabha. Fine. So who is the presiding officers of Lok Sabha? Speaker. How do the Lok Sabha is elected? Lok Sabha is elected through a simple majority at the Lok Sabha. Fine. Clear? In the absence of Speaker, Deputy Speaker is the presiding officer of Lok Sabha. और यदि Deputy Speaker भी नहीं थिबे, ताहले President 10 जन को से elect करसन, ताकि करसन Speaker of pro tem. Okay, they will preside the office of the Lok Sabha. Fine. Next, तमें बुझना compositions, then बुझला tenure, what time. Okay, tangar periods. Then we understood who is the presiding officers. In fact, who is the first speaker of Lok Sabha? Questions may be asked. The first speaker of Lok Sabha is Sri G.V. Mavalankar. Sri G.V. Mavalankar. Okay. Who is the first deputy speaker of Lok Sabha? Sri Ananta Sayanam Iyengar. Ananta Sayanam Iyengar. Okay. Who is the speaker of Lok Sabha right now? Sri Om Birla. K. Sri Om Birla. Fine. Clear? बुझिएगा ना? Next. तो पार्लियामेंट के चलो चे स्पीकर. पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट और लोकसभा दा. Okay, fine. Because parliament for तीनटा जिनिस के ना, president of the house. Next, what are the powers of Lok Sabha? What are the powers of Lok Sabha? Lok Sabha, both Lok Sabha as well as Rajya Sabha, they enjoy equal power, except in certain things. Okay, but powers जानवर पूर्वरु आमे गुटे जिनिस बुझमा, bill and act. What is that bill and act? Bill कहले काना? Bill are the draft proposals, or bill are the drafts or proposals introduced by the minister or the member of house. Okay, member of house. And if it is passed by both the Lok Sabha, Rajya Sabha, and president will give the assent on it, then the bill will become the act. Lok Sabha hoche, Rajya Sabha hoche, either it a par hela, Rajya Sabha ek par hela, फिर जाके president जो sign कले act हवा. Clear? बुझिगला? But bill ता उन्हें बहुत रे ही परवा act pass हला परे जाए. It means that इटा की इंता हसर भी कोई परमा
जेते भी एक्ट अच्छे सब गुटे गुटे बिल निहाती हेइथिबा बट जेते बिल अच्छे एक्ट हेई नाही थिबा केते गुडे बिल एक्ट भी परवा केते गुडे बिल एक्ट नाही भी हेइथिबा इट मींस द लोकसभा रे पास हे गला राज्यसभा रे पास नाही होला कि राज्यसभा रे पास होला लोकसभा रे नाही हेइथिबा प्रॉब्लम में अकर्स बट एक्ट माने सबुना पास हेकरी प्रेसिडेंट साइन करथिबे एंड दैट बिकम द लॉ ऑफ द लैंड वेयर द पीपल इज अबाइड टू ओबे द लॉ क्लियर बुझी गला में इनफैक्ट बिल बहुत प्रकार अच्छे बिल गाना बहुत प्रकार अच्छे व्हाट आर दैट द बिल्स if it is introduced by minister then it is called as government bill note it if it is introduced by minister then it is called as government bill if it is introduced other than the minister in fact the members of lead members of which one governments or members of ruling party are also called as what प्राइवेट मेंबर बिल बुझी गला में जदी बिल जोड़े मिनिस्टर जदी इंट्रोड्यूस करिथिबे ताहाके गवर्नमेंट बिल कहमा आ जदी मिनिस्टर छोड़ा केहनी भी मेंबर्स सेटा रूलिंग पार्टी रो मेंबर होना कहीं कि ओपोजिशन पार्टी रो मेंबर होना कहीं कि से केहनी भी मेंबर जदी सेटा इंट्रोड्यूस करबे ताहाके हमें प्राइवेट मेंबर बिल हमें कहमा क्लियर इनफैक्ट बिल गोटे अच्छे मनी बिल भी आ गोटे अदर बिल दैट इज वेरी इंपोर्टेंट मनी बिल जदी कहनी भी बिल कहनी टैक्स ऊपर थिबा लोन आकार थिबा कि रिलेट टू फाइनेंस थिबा ताहाके मनी बिल कहा जेबा आ गोटे बिल आइदर मनी बिल कि ऑर्डिनरी बिल से भितरे भी जे डिस्प्यूट असला then the decisions of the speaker is treated as final questions है नहीं आसवा if the bill is either a bill money bills or ordinary bills who will मतलब which decisions will be final option देथिबा president option देथिबा speaker of lok sabha option देथिबा chairman of rajya sabha option देथिबा none of the above then speaker marbo speaker of the lok sabha clear money bill in the case of money bill lok sabha has the overriding power lok sabha is the overriding power in fact the lok sabha is more powerful relate to money bill clear how is it let me prove it have procedure रे ही प्रश्न होने टे अच्छे lok sabha can money bill can only be introduced in lok sabha only लोकसभा रे ही खाली इंट्रोड्यूस होबा कहला कथा दुई रे राज्यसभा के तारपरे जीवा गला परे राज्यसभा सेटा के रखवा डिस्कस करवा बट केबे भी 14 दिन रु अधिकार रखी पारिबो नाही आ जदी रखवा ऑटोमेटिकली पले आवा लोकसभा के आउ राज्यसभा जहां भी किसी सजेशंस करि दिबा एमेंड भी करि दिबा सरा लोकसभा आइदर दे कैन एक्सेप्ट और लोकसभा may not accept then the लोकसभा फिर पठावे प्रेसिडेंट के महामहिम पद के और प्रेसिडेंट is bound to give his or her assent से तांकर सिग्नेचर देवाटा सेने बाध्य so relate to money bill लोकसभा is more powerful प्रश्न आसवा who माने where it can introduce अलगा बिल माने कहनी ने भी इंट्रोडक्शन से ही परवा money bill can only introduce in Lok Sabha first question second Rajya Sabha has very limited power Rajya Sabha cannot change it हां सजेशन दे परवा से सजेशन पर डिपेंड करू छे Lok Sabha के either accept करवा कि नहीं करे so and third questions Rajya Sabha केते दिन तक रखी परवा 14 दिन तक 14 दिन रो अधिकार रखी पारिबो नाही क्लियर पर फिर Lok Sabha के पाके जीवा फाइनली प्रेसिडेंट विल बाउंड टू साइन क्लियर बुझी गला में हाँ तो रिलेट टू मनी बिल हु इज द पावरफुल लोक सभा फाइन नेक्स्ट इनफैक्ट बट इन द केस ऑफ अदर बिल जदि अलगा बिल के देखा हुआ अलगा बिल रा बोथ लोक सभा एंड राज्य सभा इज पावरफुल एंड इक्वल पावर क्लियर लोक सभा राज्य सभा अलगा बिल माने कहनी ने भी इंट्रोडक्शन से ही पारवा
लोकसभा रे भी राज्यसभा रे भी बुझुछ आ राज्यसभा धरिना इंट्रोडक्शन हैला आ लोकसभा सारा किछि दिन रखी पकाला 6 मास रो अधिक लैप्स हे गला कि राज्यसभा रे इंट्रोडक्शन हैला लोकसभा रिजेक्ट कर देला कि लोकसभा रे यदि इंट्रोडक्शन हैला राज्यसभा रिजेक्ट कर देला तो कहनी भी बिल जदि डिस्प्यूट आसुचे बा दुहिटा हाउस रे सहमति नै न एग्रीड नै न बा स्टेलमेट ही जाउचे तो से केस रे भी गुटे मेकानिज्म अच्छे ताके काण कहसन जॉइंट सिटिंग ताके काण कहसन जॉइंट सिटिंग ओके ई सबरे केने लिखाई छे कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखाई छे केते आर्टिकल्स के केते 79 रो 122 भितरे ई सब जिनिस लिखाई छे जहां भी मैं कहू छ ओके ओके एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जॉइंट सिटिंग जेंदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा के स्पीकर थिले राज्यसभा रो पढ़मा चेयरमैन बा वाइस प्रेसिडेंट तो जॉइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा रो जॉइंट सिटिंग हेबा then who is the presiding officer then the answer will be the speaker of lok sabha keep it in mind bujhigala prashna ine bi asba so who is the presiding officers during the time of joint sitting of parliament lok sabha and rajya sabha that answer is speaker of lok sabha clear bujhigala next so in this way we understood about what so far हम बुझू जा कहर बाबद रे लोकसभा बाबद रे केते जिनिस हमें बुझलाना फाइन क्लियर लोकसभा रो बिल बुझला एक्ट बुझला प्रश्न प्लीज नोट ए क्वेश्चंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट फर्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा सेकंड in the absence of speaker and deputy speakers who will preside the Lok Sabha note that how many seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribe in the Lok Sabha okay these are a few questions please note it and write it into the comment box next already I told in fact the parliament of compositions fine power functions and many more we have run clear so far ame बुझी गला काना लोक सभा नेक्स्ट लोक सभा के यदि हम छाडी दमा इन फैक्ट गुटे जिनिस हम देखमा कि लोक सभा रो मीटिंग बा इन फैक्ट राज्य सभा रो भी मीटिंग जदि हेबा के हेले मिनिमम मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट अवर देयर आ से मिनिमम मेंबर्स के गाना कहसन क्वारम कहसन काना कहसन क्वारम आ केते रहबार कथा 110 तो लोकसभा रे केते लोकसभा रो मिनिमम केते में कहितले 550 प्लस 2 बा एवरेज स्ट्रेंथ अछि 543 तो मिनिमम दर 110 केते 5 माने 54.3 बाय ताके 55 हमें कहमा क्लियर उडे लोक के तीन भाग नहीं करिवे ना तो काना the minimum strength of Lok Sabha for a meeting it should be 55 how much 55 and the Rajya Sabha रे केते जेतु हम जानि छ पढे के कहमी हला 245 by it is 25 कहि देमी टोटल परे about the Rajya Sabha fine हां तो ना नहीं ओके और in fact ये लोक सभा रा में पढ़ना एते जन टोटल मेंबर सो नो हाईएस्ट मेंबर कैन स्टेट रो आइसन इठाना में गुटे इनी सछे ई गुटे इनी साउथ रे कहू छ पहिले टिके ध्यान देवा 550 कहितला कॉन्स्टिट्यूशंस रे लिखा होछे हां कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशंस रे 530 प्लस 20 that is 550 लिखा है 530 represent the states हला यूपी रो हाईएस्ट एट प्रेजेंट 80 ओडिसा रो 21 और 20 टा यूनियन टेरिटरीज नेशनल कैपिटल टेरिटरी रो हाईएस्ट तापर पुडुचेरी जम्मू एंड कश्मीर सब जिनिस अछि फाइन क्लियर इनफर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सब फाइन ओके गटिना लोकसभा रो स्ट्रेंथ हमें समस्ते बुझिलो ना नहीं और लोकसभा रे इनफैक्ट
गवर्नमेंट इज फॉर्म रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी जेते भी धरिनियो केते 545 अछि इतार अधा केते 2 दुने 4 2 7 14 2 दुने 4 तो 273 कहनी भी पॉलिटिकल पार्टी जदि गवर्नमेंट फॉर्म करवा लगी मिनिमम मेंबर 273 is required, that is more than half, 1 plus half. Clear? If the no political party got this, then ताहले किछि उडे political party मिसी करी समय गवर्नमेंट फॉर्मेशंस करबे बा ताहाके कोलिशंस गवर्नमेंट आमे कहूचा और रूलिंग पार्टी रो जे हेड ताहाके लीडर ऑफ द पार्टी को हायसी बा एट प्रेजेंट who is the leader of the party, who is the leader of the ruling party, who is the leader of the Lok Sabha at present is Sri Narendra Damodar Das Modi. Who? Sri Narendra Damodar Das Modi ji is the prime minister of our country. In fact, he is the leader of the ruling party. In fact, he is the leader of the Lok Sabha. Oppositions, our remaining members are called as oppositions party, and as of now no member has been elected as no member has been designated as or recognized by the speaker as a leader of the oppositions. So Lok Sabha ro 17th Lok Sabha रे leader of the oppositions एबे केही नाई नो clear बुझिलो ना नहीं हां तो नेक्स्ट तार गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर माने इता रिलेटेड उठा अछि ई लोकसभा देन सेशंस असा सेशंस माने हम कन केतेटा सेशंस नॉर्मली तीनटा सेशंस माने रखिथियो पिले गुटे हला बजट सेशन गुटे कना बजट सेशन ओके लेखि नबो बजट सेशन केबे फेब्रुआरी रे इंट्रोड्यूस होबा सल्ला के मई पाखा पाखी आउटे ऑटम सेशंस बा मॉनसून सेशन जेंटा की जून के छाड़ी दियो जुलाई अगस्त रे फाइन आउ लास्ट ला विंटर सेशंस तो वर्ष को 3 थर पाखा पाखी सेशंस बयसी वर्ष को 3 थर पाखा पाखी सेशंस बयसी जेंटा की अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर चलते नवंबर to December. This is the thing. This is all about guys. बुझिलो ना नहीं. Fine. Okay. यदि किसी डाउट हो तो please ask me because nobody knows everything. Nobody knows everything and we all are in a source of learning. Okay. तमाम मानते हैं बहुत किसी सीखवा लगी चाहूँचे. So please make it in comment box कि वीडियो टा के आउ केनता करी सजै हेबा कि स्ट्रेंथन करी हेबा फाइन. So how many sessions are there? तीनटा काना budget, autumn or monsoons and the last one is the winter sessions. Fine. तो लोकसभा आमे समझते बुझी गले क्लियर. राज्यसभा के जल्दी जल्दी कहूँ फाइन व्हाट इज दैट आमे जहा जहा जानी जे ताहा ही पढ़मा. लोकसभा के टिके कंपेयर करिके लोकसभा मेंबर संख्या जहा थिले राज्यसभा लिटिल बिट डिफरेंट 238 प्लस 12 238 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड केनता करी इनडायरेक्टली इलेक्टेड ता माने केन माने वोट देबी ताकू आमे जहा के वोट देइथिला एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली खाली एमएलए माने वोट देबे केन नॉर स्टेट रो आ यूनियन टेरिटरी जेन ने भी लेजिस्लेटिव असेंबली होचे सेवा नहीं वोट देबे. इट मींस द क्लियर द एमएलए ओनली वोट ओके टू चूज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. और राज्यसभा रो मेंबर वाले मिनिमम एज केते 30 वर्ष 30 ईयर दरकार. फाइन. हाउ मेनी इयर्स 30 years is minimum years is required. Fine. And next one is the how E12s are nominated. Prashno I see who nominates to the Rajya Sabha. The President of India nominates
12 members to the Rajya Sabha having special knowledge and practical experience on arts, science, social service, and another one is the literature. Okay, option ita hi daba. Option de thiba art, science, commerce. Okay, but don't get confused. Art, science and social service or literature. Don't get confused that sports is a part of it. Literature, art, science and social service are the 4 grounds where the president nominates member to the Rajya Sabha. Clear? So in this way the maximum strength of Rajya Sabha can be 250. But at present, this is the maximum strength which are mentioned in the constitutions, and at present the strength is 233 plus 12. So in this way the at present the members of Rajya Sabha is 245. Now what is Rajya Sabha? Who presides the Rajya Sabha? Like Lok Sabha ra ke thile speaker, Rajya Sabha ra it is the chairman. Who it is? Chairman of Rajya Sabha. Now je bhi vice president hebe, vice president is the ex officio chairpersons of Rajya Sabha. Kiye vice president is the ex officio chairpersons of Rajya Sabha. Clear? Speaker nahi thile ke cholothile office? Deputy speaker. Vice chairman nahi thile ke cholabe? Deputy chairman. Kiye deputy chairman. Clear? ये भी यदि नहीं थिबे ये पैनल गुटे हवा पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन क्वेश्चन था के ये जिनिस का मने रखबो. Who is the first chairman of Rajya Sabha or who is the first vice president of Rajya Sabha? Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. जे की 2 थर लागी 1962 तक थिले. Fine. And the deputies. Okay. At present who is the vice president? Sri Jagdeep Dhankar. Who is that? Sri Jagdeep Dhankar. अब आमे इनके बेसी नहीं जाऊं. Fine. Clear तो लिखुचो ना नहीं. ले आके जीवार है बुझवार गोटे बड़ जिनिस बहुत हेल्पफुल अछि हला. परसिवरेंस बहुत इंपोर्टेंट है. पेशेंस क्या है हमें गोटे चैप्टर सरी जीवा 5 मिनिट रे. सो कीप इट टिके फ्रेश है जो पेंडी पियो कि मजा टे करो फैट नॉट मजा नहीं माने बिस्किट टे किसी भी फ्रूट्स टे खाइ जो फिर सुनो. ठीक है ला क्या न थिला लोकसभा सारीचा राज्य सभा रो मेंबर स्ट्रेंथ बुझला कि प्रिसाइडिंग किए चेयरमैन बा वाइस चेयरमैन सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन और जदि नहीं थिबे वाला पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन. क्लियर? राज्यसभा रो फिर गोटे जिनिस देखमा राज्यसभा काना कहसी इट इज आल्सो कॉल्ड एज अपर हाउस. इट इज आल्सो कॉल्ड एज काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स. ओके इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड चैम्बर. फाइन. राज्यसभा इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स. Lok Sabha represents the people. Fine. Clear? And Rajya Sabha ro बहुत important key one kana it is a permanent house. What it is called as? It is a permanent house. It means that it never get dissolved. It never dissolved. Clear? Unlike Lok Sabha. Lok Sabha रे प्रति इलेक्शन जेतले हवा 17 जनरल इलेक्शन सरी तो लोक सभा रे एबे 18th हवा देखो सब मेंबर आउ थरे इलेक्शन हवा. बट राज्य सभा रे कान जेते भी मेंबर अछो प्रति 2 वर्ष के घा ओके से माने न्यू मेंबर्स ओके 1/3 मेंबर्स री इलेक्टेड आउ तांको टेन्योर केते अनलाइक लोकसभा रो 5 वर्ष आउ जेंडा में कहितली इमरजेंसी कैसे वो वर्षे बड़ भाकंबा बट इताकर केते 6 वर्ष. So the tenure of Rajya Sabha member of Rajya Sabha is 6 years. Our tenure of Rajya Sabha that is permanent. Fine. Clear? बुझी गला. किंतु chairman व vice president और tenure 5 years. Don't get confused over there. बुझी गला हमें. तो राज्य सभा र strength fine. Presiding officer भी बुझी गला. The nature का ना what is that?
nature is it is a permanent house. Fine. In fact vice president ଆଉ ଆମେ president बाबदरे गोटे अलगा क्लास रे करमा देखमा से टाइम रे कि हाउ डू दे आर इलेक्टेड इने खाली हमें मेंबर ऑफ राज्यसभा केनता कर इलेक्टेड हले देखना केनता करी द थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शंस और की इलेक्शंस कर से कि इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड हियर द मेंबर्स आर इलेक्टेड by the people indirectly. We do elect MLA, okay, and MLA will cast their vote to choose the member of Rajya Sabha. Prashna padwa, is the member of legislative councils can participate in the election of the Rajya Sabha? No, no, no. Clear? By the keteta state legislative council ଅଛି କି 6ଟା କାଣା କାଣା थिला ओडिशा तोला दुईटा जाक छ तोला दुईटा केन केनटा ओडिशा आंध्र प्रदेश तेलंगाना 3टा सल्ला ऊपर बिहार 4टा साइड रे केनटा उत्तर प्रदेश 5टा महाराष्ट्र 6टा क्लियर बुझी गलाते सो इन दिस वे देयर आर 6टा ही स्टेट अच्छे जेंथरे केन काना अच्छे 6टा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छे जन क्या नाही गाउं डिटेल क्लियर राज्यसभा रो बुझी गला हमें बाय द राज्यसभा रो यंगेस्ट मेंबर के कहि पारबो श्री राघव चड्ढा ओके आउ जे कि आम आदमी पार्टी रो पंजाब रो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हिचो ओके आउ ओल्डेस्ट मेंबर समस्त जानि छ वन ऑफ द वेरी नॉलेजेबल पर्सन्स तांकर कंट्रीब्यूशंस भी भारत रे बहुत किछि अछि डॉक्टर मनमोहन सिंह हु इज दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई रे गवर्नर थिले फाइनेंस कमिशन मेंबर थिले ओके इनफैक्ट प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन थिले ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस कंट्री क्लियर नेक्स्ट तो हम केने देखु राज्यसभा रो ओल्डेस्ट मेंबर किए डॉक्टर मनमोहन सिंह आउ हेंदा राज्यसभा रो लीडर ऑफ द हाउस किए श्री पीयूष गोयल किए श्री पीयूष गोयल ओके आउ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जे की कांग्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस रो भी प्रेसिडेंट अच्छा फाइन क्लियर तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एट राज्यसभा के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे फाइन बुझी गला समस्ते सो बट इन द केस ऑफ लोकसभा नो लीडर ऑफ द ऑपोजिशंस आर देयर फाइन बुझी गला नेक्स्ट सो आउ गुड लास्ट कीप पेशेंस गाइस ठीक क्या न खाली कि लोकसभा रे जनता गुटे एक्स्ट्रा पावर यूनिक पावर मनी बिल रे थिला राज्यसभा रो भी गुटे जिनिस अच्छे हमें जानी चाहिए यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट रेसिडुअल पावर ई स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट रो काना एक्सक्लूसिव पावर थिसी बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर द नेशनल इंटरेस्ट के आखी आगारे रखी करी राज्यसभा गुटे रिजोल्यूशंस पास करी स्टेट लिस्ट रे से नीचे भी लॉ बनै पारबा क्लियर तो गुटे जिनिस मने रहउचे तो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स व्हाट काउंसिल्स ऑफ स्टेट और से जिनिसटा इठाना अच्छे राज्यसभा हैज सर्टेन एक्स्ट्रा पावर with relate to this that Rajya Sabha can make the law माने initiate the law केनता करी for the national interest केनता करी state list जहां भी subject अच्छे पाखा पाखी at present I think 61 number of subjects अच्छे से थेरे भी राज्य सभा can make the law बुझलो clear so note it guys both लोक सभा और राज्य सभा गोटे सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है आउ हमें नेक्स्ट क्लास इटा के ही आगे नमा ठीक है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट फाइन आउ किछ ठीक है लोकसभा राज्यसभा के ठीक है कंपेयर कर देमा देन वी विल गो अहेड गाइस ओके आउ दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर रिलेट टू
for all the competitive exam and from our point of view also. और যদি ভাল লাগলো প্লিজ शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस हला शेयर करो ताकि और के बेनिफिट कीजिए फाइन ओके एंड गिव मी सजेशन for its betterment. Fine. Have a great time. Enjoy.